गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए बेटा शुरू करेंगे। सर आज हम देखने वाले व्हाट आर द करंट इश्यूज व्हाट आर द करंट इश्यूज दैट आर इंडियन इकोनॉमी फेसेस एंड वन ऑफ द मेजर इशू इज poverty, right? Today we'll be having a look at poverty, a brief intro maybe, right? हाँ जी, चलिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। Let's crack your 12 CBSE guys. All right. Now, a very brief introduction about me. Okay, I'm a faculty of economics and accounts. I've been teaching at 11th, 12th, and as well as in C Foundation. And it's been 2 years, and one thing is always constant, that is conceptual learning. Yeah, the conceptual learning. One thing will always remain constant, that is conceptual learning. सर हम किस पे फोकस नहीं करते, हम रेक्टिफिकेशन पे फोकस नहीं करते। हमारा फोकस रहता है हर क्लास का लॉजिक्स पे। ठीक है, हाउ टू बिल्ड एन इंटुइटिव, ठीक है, हाउ टू बिल्ड एन इंटुइटिव नॉलेज, ठीक है, कैसे हम इसे रिलेट कर सके। पूरा पूरा फोकस हमारा लॉजिक्स पे रहता है। ठीक है, तो जहां बात रखने की आ जाती है, ठीक है, वो एरियाज वो एरियाज बहुत ही कम होते हैं। ठीक है, मेजरली मेजरली हम हमेशा लॉजिक्स पे जाते हैं, राइट। एंड ये हमेशा से रहा है, ये हाल हमेशा से रहा है हमारा। किसके पीछे भागने का, लॉजिक्स के पीछे भागने का। ठीक है, इसी इसी के साथ इसी के साथ सर आपको हर हर एक क्लास में हर एक क्लास में आपको कॉन्सेप्ट दिखेंगे। हर एक क्लास में आपको क्या दिखेंगे, हर एक क्लास में आपको कॉन्सेप्ट्स दिखेंगे, ना कि कोई रटना। ठीक है। हाँ, हाँ, अगर आप नए हैं, इफ यू आर न्यू टू अन अकेडमी, यू माइट हैव वन क्वेश्चन कि सर अन अकेडमी क्या है। प्लीज, अन अकेडमी इज इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। क्या ये इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ आप आपके सारे सब्जेक्ट्स, राइट, आपके सारे सब्जेक्ट्स कर सकते हैं। आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ऑल द सब्जेक्ट्स आर अवेलेबल राइट हियर। हमारा फोकस किस पे है, क्लास 12। ठीक है, हमारा फोकस है क्लास 12 पे। तो आपके सारे क्लास 12 के सारे सब्जेक्ट्स आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगे, दैट इज अन अकेडमी। ठीक है, नाउ यू कैन टेक बेनिफिट यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ आर वेरियस रिसोर्सेज। ठीक है, जैसे जो हमारे फ्री रिसोर्सेज हैं। राइट, यूट्यूब एंड स्पेशल क्लासेस, ये सारे क्या है, ये सारे हमारे फ्री रिसोर्सेज है। यू कैन टेक बेनिफिट फ्रॉम दिस, but one thing is to be noted that these are just demo classes, guys, right? To unlock to unlock to unlock the full to unlock the full package, need to get a subscription, right? This is simply your tuition fee.
दो टाइप के हैं, प्लस आइकॉनिक। ठीक है, दो टाइप के सब्सक्रिप्शन है, प्लस एंड आइकॉनिक। आई विल टेल विच वन टू गेट, बट उससे पहले हम सारे बेनिफिट्स देख लेते हैं दोनों के। हाँ सर, प्लस में सबसे पहले बात करेंगे प्लस की। प्लस में यू गेट लाइव क्लासेस दैट टू डेली, you get daily live classes, you get to interact with the educator in real time। ठीक है, there is no lag between our interaction। ठीक है, तो थोड़ा सा भी क्या नहीं रहेगा, थोड़ा सा भी lag नहीं रहेगा। if you posted a question, within a second वो question हमारी स्क्रीन पे पॉप हो जाता है। ठीक है, सिस्टम में दिख जाएगा कि this person has asked a question, this person has a doubt, this person has this query। ठीक है, so interaction is really really important। देन जो भी हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं, तो ज़रूरी है कि हम उसे टेस्ट करें। एंड टेस्ट किस बेसिस पे होते हैं सर? लाइव कोड्स। एमसीक्यू पैटर्न पे हम क्या लेते हैं? एमसीक्यू पैटर्न पे हम टेस्ट लेते हैं, और एमसीक्यू पैटर्न पे हम टेस्ट लेते हैं। एंड सर थ्रू पोल्स, थ्रू पोल्स हम हमारा कंसेप्चुअल नॉलेज टेस्ट करते हैं, बिकॉज सर एमसीक्यूज आर द बेस्ट वे टू टेस्ट योर कंसेप्चुअल नॉलेज। ऑलराइट, नाउ सर not just polls, you can also have, okay, test series and its analysis। क्या सर? टेस्ट सीरीज एंड एनालिसिस। एग्जाम्स आर वेरी न्यू, एग्जाम्स आर वेरी न्यू, तो हमें फोकस अब किस पे ज्यादा करना है सर? गिविंग एज मेनी टेस्ट सीरीज एज पॉसिबल। ठीक है, एज मेनी टेस्ट सीरीज एज पॉसिबल, एंड साथ ही साथ हमें करना है उसका एनालिसिस, हमें करना है उसका एनालिसिस। तो दिस इज अ रियली रियली इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए देखिए, एनालिसिस से क्योंकि आपको पता चलेगा कि वेयर यू स्टैंड, हाउ वेल हैव यू परफॉर्म, कौन से सब्जेक्ट में आपको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। ठीक है, ऑलराइट, सो यू नीड टू गिव टेस्ट सीरीज एंड, ठीक है, ताकि टेस्ट सीरीज दीजिए ताकि आप एनालिसिस कर सकें। फिर बाद में कोई डाउट्स आए तो उसके लिए डाउट सेशंस रहेंगे। ठीक है, देयर विल बी डाउट सेशंस, आपको उसकी चिंता नहीं करनी है। ऑलराइट, आपको उसकी चिंता नहीं करनी। सारे डाउट क्लियरिंग सेशंस रहेंगे कहाँ पे सर? प्लस में। डाउट क्लियरिंग सेशंस भी कहाँ होंगे? प्लस में। These were few of the benefits, और भी बेनिफिट है, जैसे you get unlimited access to the views, ठीक है, to all your subjects, ठीक है, and the classroom। now देखिए, ऐसा नहीं है कि आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं इकोनॉमिक्स का, ऐसा सर सिर्फ सब्सक्रिप्शन इकोनॉमिक्स का नहीं रहता सर, सब्सक्रिप्शन पूरी क्लास 12th का है। जस्ट रिमेंबर, बाय टेकिंग वन सब्सक्रिप्शन यू गेट टू अटेंड all your classes। ठीक है, this tuition fee that you will be paying is for all your subjects, not just for one। Correct, then you get unlimited views on the video। ठीक है, वीडियो पे अनलिमिटेड व्यूज रहे, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई बैरियर नहीं है। साथ ही साथ आप नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, करके रख सकते हैं सर फॉर रेफरेंस। ठीक है, तो ये सारे प्लस के बेनिफिट्स है। वेयर एज आइकॉनिक, सर आइकॉनिक जो है, आइकॉनिक इज मोर बेस्ड ऑन वन टू वन इंटरेक्शन। ठीक है, आइकॉनिक वन टू वन इंटरेक्शन पे बेस्ड है, तो we will be your personal coach। Alright, we will be your personal coach। आपकी मेंटरिंग की जाएगी, आपकी स्टडी प्लान्स,
right? आपके schedules and each and everything would be discussed, planned accordingly. Doubt sessions, iconic में doubt sessions कैसे रहेंगे? Iconic में doubt sessions totally exclusive रहेंगे. That is, those doubt sessions will be only for you, and there will also be something such as parental connect. Now, why parental connect is important? Because I keep on saying that we need a positive environment for doing any job. Okay? And studies is, is such a thing. Basically, sir, we need a positive environment. And parental connect gives us that opportunity. Okay? Please, it's very simple. When your hard work gets communicated to your parents, they will they will be very happy. Okay? Not because you are studying, because उन्हें पता चलेगा, okay, कि your hard work is going to pay off, right? So the sole motive is to give a weekly report, okay, give a weekly report and build a positive environment around you. And सारे, ठीक है, and iconic में सारे प्लस के benefits रहते ही रहते हैं. Okay? Now all you have to do is download the app. फिर कहाँ से करेंगे? फिर कहाँ से करेंगे? कहीं से भी, प्ले स्टोर, आई स्टोर, जहाँ से आपकी इच्छा हो, ठीक है, जहाँ से आपकी इच्छा हो वहां से कर लीजिए. जहाँ से भी आपकी इच्छा हो वहां से कर लीजिए. Right? Then after you sign up, select your goal. ठीक है, हमारा गोल क्या है? हमारा गोल रहेगा CBSE 12th. हमारा गोल क्या रहेगा? हमारा गोल रहेगा CBSE 12th. Now, as soon as you select, CBSE 12th, you have to choose from a variety of subscriptions. Now, these subscriptions, these are for students who are in 11th and who wishes to take a subscription for both 11th and 12th. Okay? Who wishes to take a subscription for both 11th and 12th. So plus May you have 6 variants, say one from 1 month to 24 months. Okay? Now my recommendation for people, okay, my recommendation is going for long-term plans. My recommendation is going for a long-term plan. Why? Because it will establish a good base, okay, and importantly, it covers both. It covers everything. Okay, it covers each and every subject. It covers everything. So I would suggest go for a long-term plan. जो भी बच्चे 11th में है वो, because 11th 12th सब कवर हो जाएगा, है कि नहीं? 11th 12th सब कवर हो जाएगा. एंड अगर आप एक कोड लगा देते हैं, SAJYT, अगर आप ये कोड लगा देते हैं तो आपको 10% ऑफ भी मिल जाएगा साथ ही साथ, है कि नहीं? एंड सिमिलरली आइकॉनिक में यू हैव 4. इसमें भी आई सजेस्ट गो फॉर अ लॉन्गर टर्म प्लान. Go for a longer term plan. And for people who are in 11th, I suggest getting a iconic subscription. Because ये अभी से क्या बनाएगा सर? अभी से
एक बेस क्रिएट करेगा आपके लिए, राइट। गो फॉर अ लॉन्गर टर्म प्लान। आइकॉनिक के ऊपर मैं ज़्यादा स्ट्रेस करूँगा। इफ यू वांट टू गेट अ सब्सक्रिप्शन, गेट आइकॉनिक। एंड द 10% डिस्काउंट के लिए कोड। अब आ जाते हैं हमारे 12th के सब्सक्रिप्शंस में। यहाँ आइए सर, 12th में देयर आर 4, एक 1 मंथ वाला भी है, एक 1 मंथ वाला भी है, then 1, 3, 6 and 12. Now it is important that हम कौन सा लें, ठीक है, हम कौन सा लें। So listen to me, 6 is out of the scene, 12 is also out of the scene. The options we have is 1 month, 3 months. ठीक है सर, इसको क्यों काट दिया, इसको क्यों काट दिया, बिकॉज देखिए अभी टाइम उतना नहीं है, टाइम उतना नहीं है कि हम 6 मंथ्स या 12 मंथ्स लें, ठीक है। तो गाइज आपने कौन सा लेना है सर, आपने इधर 1 मंथ और 3 मंथ। तो 1 मंथ इज वर्थ 3000, 3 मंथ्स इज वर्थ 6.5। आप ये कोड लगा देंगे, ठीक है, कोड लगा देंगे, यू विल गेट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। 1 month will be 27 and 3 months will be 5.50। and I highly recommend, because आज क्या है, 2 दिसंबर, ठीक है। आज हो सकता है probably आज हो सकता है probably सर क्या एग्जाम डेट रिलीज करे, बोला तो गया था, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू माई अंडरस्टैंडिंग, अकॉर्डिंग टू माई अंडरस्टैंडिंग आज एग्जाम्स डेट आ जाएगी एंड मोस्ट प्रॉब्ली मार्च में रहेगी एग्जाम, जितना मुझे लगता है ये मार्च में रहेगी। एंड सर we have 2 months, roughly 2 months, so you can get a month or 3 month subscription। why? Because हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सर प्रैक्टिस, हमें देने हैं टेस्ट सीरीज, हमें देने हैं रिवीजन सेशंस को टाइम, ठीक है। हमें ये सारी चीजें करनी है और ये सारी चीजें पॉसिबल है थ्रू प्लस, ये सारी चीजें पॉसिबल है थ्रू प्लस। अब आइकॉनिक में 2 वेरिएंट्स है, 6 एंड 12। आई डोंट रिकमेंड दिस नाउ, अभी अभी फॉर द करंट सिचुएशन आई डोंट रिकमेंड, बस एग्जाम्स को टाइम नहीं बचा है। ऑलराइट, इफ यू वांट लेना कौन सा है, प्लस, दैट्स इट। बट ये 12th वाले बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, 11th वालों के लिए आई वुड highly recommend go for a iconic subscription, go for an iconic subscription, right? चलिए, I hope things are clear। then फिर एक लिंक है डिस्क्रिप्शन में, एक लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसे भी फटाफट से क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। वो किसकी सर, वो टेलीग्राम चैनल की लिंक है। वहाँ पे आपको मिल रहे हैं डेली अपडेट्स अबाउट ईच एंड एवरी क्लास, ठीक है। वहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, डेली अपडेट्स अबाउट ईच एंड एवरी क्लास। तो आई हाईली रिकमेंड गो एंड ज्वाइन द चैनल, ताकि आपको क्या मिल जाए, डेली अपडेट्स मिलते जाए हर एक हर एक वीडियो पे। हाँ,
Guys, you must probably be knowing about our special classes. Okay, I'll tell you something interesting about our special classes in the end. Okay? तो आखिर में थोड़ा स्पेशल क्लासेस के बारे में भी देखेंगे. Just a second. ड्रॉप तो नहीं हो रहा है. ठीक है. आई डोंट नो व्हाई मुझे थोड़ा लैग एक्सपीरियंस हो रहा था. ऑलराइट, चलिए. नेवरदलेस, सो so so we are looking into the current challenges that our Indian economy faces. ठीक है. एंड किस पे अभी ध्यान देना है? किस पे भी ध्यान देना है? भी ध्यान देना है हमें सिर्फ पॉवर्टी पे. किस पे ध्यान देना है? पॉवर्टी. ठीक है नहीं. सिर्फ पॉवर्टी पे ध्यान देना है क्योंकि it is the most largely it is the most largely spread. It is the most largely spread issue. तो चलिए देखते हैं. In previous chapters, we have studied that economic policies that India has taken in the last 7 decades, okay, and the outcome of these policies with relation to various development indicators. अभी तक हमने अभी तक हमने टाइमलाइन कैसी चल रही थी हमारी. हमारी टाइमलाइन कैसी चल रही थी. सर हमने देखा प्री इंडिपेंडेंस पीरियड. ठीक है. देन देखा पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड. देन we saw Indian economy in 1950 to 1990 and what were the reforms and economic changes in 1991, right? अब अब सर अब बात आती है सर इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है एंड क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं. ठीक है. इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है एंड क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं. सो ड्यूरिंग द पोस्ट रिफॉर्म, ठीक है, that is after 1991, we have implemented many economic policies, ठीक है, which fall under LPG. ठीक है. which fall under what? which falls under LPG. I hope LPG का फुल फॉर्म सभी को पता है. लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. तो providing minimum basic needs to the people and reduction of poverty has been the major aim of independent India. Now, why poverty has been into the forefront? Why poverty has been into forefront? Because because is after we got independent, after we got independent, we have to start from stagnation. Okay, there was a sort of stagnation in the Indian economy, and also after few years, okay, a few years, we were hit by economic crisis. Yeah, we were hit by economic crisis, which really had an impact on the economy.
And that is why we had to come up with new economic policy. So poverty has always been in the forefront. The pattern of development that successive 5-year plan envisage laid emphasis on development of the poor. So the first 5-year plans, okay, the first 5-year plans always always emphasized on the upliftment of the poor. Okay, while addressing again Nehru, while addressing the assembly 1947, Nehru said this achievement, that means he meant that the independence, right? This achievement, the independence, is but a step, an opening of opportunity to the great triumphs and achievements that awaits us. The ending of poverty and ignorance and disease and inequality of opportunity. And this is very, very true. So independence is just a step. It is not. It is not something by achieving we have accomplished anything. No, it is a stepping stone to success. Independence was it? It was a stepping stone to success because only only then we were and we are still trying to eliminate or at least reduce poverty, ignorance, the diseases that we are affected, and the inequality that is prevailing. However, we need to know where do we stand today. Poverty is not the only one challenge for India, as more than one-fifth of world population, okay, world's poor population lives in India. So poverty is not the only one problem, but it is it is surely a problem to be concerned about because दुनिया के जितने जितने भी लोग गरीब हैं उनमें से 1/5 कहाँ रहते हैं 1/5 इंडिया में रहते हैं 1/5 कहाँ रहते हैं 1/5 इंडिया में रहते हैं so that is alarming. That is itself is alarming. So poverty has many faces, which has been changing from place to place across time and has been described in many ways. ठीक है? तो poverty का मतलब लगातार चेंज होते रहा है ठीक है जगह से जगह टाइम से टाइम most often poverty is a situation that people want to escape so poverty is call to action for the poor and wealthy alike a call to change the world so that many more may have enough to eat or many more may have enough to eat may have adequate shelter education and proper health protection from violence and a general public voice yeah a general public voice these are these are the things yeah, for which we need to work yeah, these are the things that we need to work that we can reduce poverty yeah, to know what helps to reduce poverty what works and what doesn't and what changes over time poverty needs to be defined measured and sometimes even experienced okay? As poverty has many dimensions it has been
looked at the various indicators, okay, like level of income and consumption, social indicators, indicators of vulnerability to risk, and socio-political access. The poverty means escape. Okay? Poverty is an escape so that we enter this scenario where we have enough to eat, adequate shelter, proper education and health facilities, protection from violence, and a public voice. Right? So, so to identify, we must know first that who are the poor. Okay, we must know who are the poor. Right? So you may have noticed, देखिए, guys, ये जो है, so this chapter is going to be very intuitive and you may relate it very well. ठीक है, इसमें लॉजिक्स अपने आप आते जाएंगे, it will flow. Okay, why? Because it is very relatable, and that is what I like about each and every subjects of commerce. Okay, that they are very very relatable. Okay. So you may have noticed your localities, neighborhoods, both in rural and urban. There are some of us who are poor and some of us who are rich. Yet the story of Anu and Sudha is a great example. Now, there are also people who belong in many stages in between. Excuse me, guys. Okay. There are rich, there are poor, and there are many people who lie in between. Pushcart vendors, right? Pushcart vendors, street cobblers, women who string flowers, rag pickers, beggars are some examples of poor and vulnerable group in urban areas. The poor people possess very few assets and reside in kacha apartments with walls made up of big mud and roof made up of grass. The poorest of them do not even have such dwellings in rural areas, and many of them are landless. They do not possess any land. Many do not even get 2 meals a day. Starvation and hunger are the key features of the poorest household. The poor lack basic literacy and skills, yeah, so that they could have economic opportunities. And the employment is also very unstable. The employment is also very unstable. So, देखिए, is if you don't have proper access to resources, if you don't have proper education, say, you will be deprived of opportunities. You will be deprived of what? Of, and there will be a very, very unstable source of employment. Malnutrition is alarming and very high among the poor. Ill health, disability, or serious illness makes them physically. They borrow from moneylenders who charge at high interest rate, and this leads to chronic indebtedness. सर डूब जाते हैं सर. They are
not able to negotiate. If they are working, they are not able to negotiate their wages. They are correct wages because इन्हें दबा दिया जाता है. They also don't have access to proper electricity. Their primary cooking medium is firewood, cow dung. Okay. Now, now the current scenario, many of them are many of them are getting fuel connection, gas connection, but still there are people in our Indian economy who still who still use cow dung cakes and firewood for cooking. And सर पानी की तो बात करी नहीं. पानी की तो बात करी नहीं. ठीक है, there is no proper drinking water. There is evidence of extreme gender inequality. Poor women receive less care on their day of motherhood, and that is very likely if that is very likely that the child which would be born, ठीक है, will be malnourished, and it will be difficult for that child to survive. Economists identify the poor on the basis of their occupation and ownership. It's, this could be important. Basis of what? The basis of occupation and ownership of assets. They state that rural poor work mainly as landless agricultural laborers, cultivators with small landholdings or landless laborers, who is engaged in a variety of non-agricultural jobs and tenant cultivators with small land. Again, the rural poor are classified as these people जिनके पास जिनके पास जमीन नहीं है और वो फार्म में ऐसे लेबर काम कर रहे हैं. ठीक है, या फिर कोई और नॉन एग्रीकल्चर जॉब उठा लिए है. अब अर्बन पुअर कौन है सर? अर्बन पुअर वही है जो रूरल से निकले थे in search of job in big cities. People who do a variety of casual jobs and are self-employed, who sells a variety of things on roadside and are engaged in various activities. All right. Now, in India, okay, to solve the problem of poverty, it has to be viable and sustainable strategies that needs to address the cause of poverty and design schemes to help the poor out. However, for these schemes to be implemented, the government needs to be able to identify who are the poor. For this, there is need to develop a scale of measure, okay, and the factors that make up the criteria for this measurement. In the pre-independent India, Dadabhai Navroji. Dadabhai Navroji was the first to discuss about the concept of poverty. He used the menu of a prisoner and used appropriate prevailing prices to arrive at what we call the jail cost level. He arrived at what? He arrived at jail cost level. However, only adults stay in jails, but whereas in a society, so there are children too. So he adjusted this jail cost living with some parameters and he came up with the poverty line. Okay. Now, the weighted average of consumption of the three segments. Okay, so which segments? So the one-third population, children, and half of them consume a very little, while others half consume
adult diet. Okay. So considering all these, he came up with the poverty line, okay, which came out to be three-fourth of the cost of living of the post-independent. Yeah, there has been several attempts to work out the mechanism to identify the number of poor in the country. For example, in 1962, the Planning Commission, now called as Niti Aayog, formed a study group. In 1979, another body called the Task Force of Projection of Minimum Needs and Effective Consumption Demands was formed. And in 1989 and 2005, expert groups were also established. For the purpose of defining poverty, we divide people into two categories, the poor and the non-poor. And the poverty line separates. Just imagine, this is the poverty line. फिर यहाँ पे कुछ लोग हैं, यहाँ पे कुछ लोग. These are the people. These are the people separated, who are separated. All right. By what? By the poverty line. So there are many kinds of poor. So if this this section is poor, so इसमें भी बहुत सारे अलग-अलग types होंगे poor के. कौन से? The absolutely poor, the very poor, and just poor. Similarly, similarly, सर non-poor में भी तो बहुत सारी types रहेंगे. Middle class, yeah, the middle class, the upper middle class, the rich, and very rich, and the absolute rich. Okay? Think of this line, okay, which separates all these people. They think of poverty line as a line which separates all these people and helps us to identify. That's what it. That is it for today, guys. That is it for today. I hope I hope आप लोग health studies कर रहे हैं. ठीक है. Now, if you want, you can go on to our platform. ठीक है. वहाँ जाके आप special classes भी attend कर सकते हैं. Special classes जितनी ज़्यादा attend करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा. क्या सर? जितनी ज़्यादा special classes आप attend कर सकते हैं उतना ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए. Because these are totally free. These are what? These are totally free. And and फिर कोड लगेगा एक. कोड क्या है? SAJYT. अब ये जो कोड है, ठीक है, ये जो कोड है, ये कोड यूज करना है टू अनलॉक द फ्री कंटेंट. ठीक है. तो आपने सिंपली जाना है ऐप में, अनअकैडमी लर्निंग ऐप, डाउनलोड हो जाए, लॉग इन करे, कोड सेट करे. ठीक है. मेन्यू बटन में जाके क्लिक ऑन स्पेशल, ठीक है, लाइव क्लासेस या स्पेशल क्लासेस पे क्लिक करें. ठीक है. एंड सिंपली एंटर दिस कोड. ठीक है. टू अनलॉक द फ्री प्लान सिंपली एंटर दिस कोड SAJYT. That's it, and you are done. ठीक है. And you are done. Now this code is very useful. The discount दे रहा है आपको, सर फ्री कंटेंट अनलॉक करके दे रहा है, साथ ही साथ क्विज ज्वाइन करने में भी आपकी क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है. क्विज ज्वाइन करने में भी क्या कर रहा है, आपकी हेल्प कर रहा है. सो यही कोड से आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन क्विज.
यही कोड से आप क्विज भी ज्वाइन कर सकते हो, राइट? दैट्स इट गाइस, एंड आई highly recommend getting a plus. You either get a 1 month or a 3 months. ठीक है, देखिए 1 month is worth 3. Yeah, सर आफ्टर डिस्काउंट वही हो जाता है 2700. I would highly recommend getting 1 month because it would be sufficient for us. ठीक है, 1 month would be sufficient. आपने सर एक कोड लगा दिया, आपने एक कोड लगा दिया, क्या हो जाएगा सर? यू विल गेट discount of 10% as well. ठीक है, I highly recommend getting a plus subscription. 1 month ही सही है, 1 month ही सही है, बट लेना जरूरी है. बट क्या, लेना जरूरी है. कोड ना भूले while checking out. ठीक है, while checking out कोड ना भूले सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑलराइट, thank you so much guys. Thank you so much for tuning in. I hope you have a good day. Take care guys. Take care. God bless.